Actually, I'm very sorry. I'm fortunately having some Wi-Fi issues on my laptop, so I'm just logged into another device. So, let's see. Acha, uh, let's wait for just one or two other participants who had previously joined in. अगर वो log in हो जाते हैं तो I'll continue the discussion of this case. I think आ ही गए हैं. All right. Ji, Dr. Sabha, we were talking about this X-ray. So I think आप कुछ कह रही थी शायद before the meeting got cut off. Gee, I was just saying that there are posterior restorations in the upper as well as lower posterior molars are restored, ठीक. and very significant on the anterior region as well as in the I could appreciate there's probably some crowding in the maxillary arch and just a prominent body fracture on the right. Gee. ठीक. All right. There's another fracture in here as well. अगर आप थोड़ा सा गौर से देख लें, maybe you can pick it up. So do you see any other fracture line in here? आपका अभी कोई आरोप मुझे नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर फादिब, but if you want me to guess I can just a second. guess कर लें please. Go through that checklist that I just shared ना कि किन sites पे usually आप PA पे fracture pick कर सकते हो. लेफ्ट रेमल कुछ लग रहा है या एंगल? लेफ्ट रेमस नहीं, लेफ्ट रेमस इज फाइन. कोई और साइट? आप बता दें, सॉरी. अच्छा, अगर आप गौर से देख लो तो देयर अपीयर्स टू बी अ लाइन ओवर हियर एज वेल. इंफीरियर बॉर्डर पे आपको यहाँ थोड़ी रेडियोलुसेंसी. I can't see the cursor. अभी नजर आ रहा है आपको? नहीं, किसी और का नजर आ रहा है? नहीं, ये मेरा कर्सर ही है और किसी का तो कर्सर इस पे नहीं होना चाहिए. I can't see the cursor. मुझे बस एक static slide नजर आ रही है. Please ask everyone उन लोग को आ रहा है नजर? I also can't see the cursor. आपको भी कर्सर नहीं नजर आ रहा है? Hang on. अच्छा, अभी नजर आ रहा है? जी जी, अब आ रहा है. I'm sorry, I think I had shared the wrong screen. अच्छा, ये अभी नजर आ रहा है आपको? जी, there's a step at the inferior border. Exactly. Around the बिल्कुल. parasympathetic. So there is, you can say that probably ये क्योंकि canine region है, I told you canine is another weak point in the mandible. तो उस area पे आपको यहाँ you should have been a bit cautious while interpreting this region. But again, इतना clear होता नहीं है due to overlap of the cervical spine. So probably you might have picked this fracture on an OPG which you had already requested. डॉक्टर फाज, जो पहले वाला आपका स्लाइड थी ना, उस पे बिल्कुल ये मास्क हुआ हुआ था, मगर इस पे अब काफी प्रोमिनेंट है, तो शायद वो पहले स्टक हो गए थे. ठीक ठीक, चलें. My apologies. Anyhow, अच्छा चलें. Let's move ahead. Okay, तो हमारे पास next participant कौन है? We have Dr. Faisal. जी, Dr. Faisal, are you with us? जी, Dr. Faisal. जी जी, please इस OPG पे comment कर लें. This is OPG of a patient. The name is not mentioned and the date of exposure is also not mentioned. Right. Both of the condyles and coronoid processes on both sides seem to be normal. And angles on both sides, also the angle region seems to be normal. Very good, shabash. Coming to the body region of the right side,
there seems to be a radiolucent line on the left side body of the mandible, Okay. and the right side of the body of the mandible, there is a line, but it's not clear. I cannot comment that either it is a fracture or this is normal. Okay. What else do you see? Yeah. And coming to the maxilla, both of the sinuses seems to be normal, although there is some artifact on the left side of maxillary sinus, I think. Okay. And there are no teeth in the maxilla, and there is pneumatization of the sinuses bilaterally. Excellent. Zabardast. And there, and in the mandible, the posterior teeth are missing. Just on the left side, posterior to the second molar, all the dentition is missing, and on the right side, distal to the canine region, all teeth are missing, and there is restoration in the right side of the canine. Excellent. Zabardast. ठीक है. And the Very nicely done. mental foramen of both sides are visible on the X-ray. Excellent. Zabardast. And the ID canal is also seems to be normal. Excellent. Chale. Very good. So you picked up everything in this. I am sorry, I don't have a PA view of this. So you ideally should always request that whenever you have a mandibular trauma OPG in front of you. So you can comment on the displacement of the fractures if there is any. But very nicely done. Sir. Very nice. Yeah, yes. We learned from you, sir. Thank you very much. Thank you. All right. Okay, next हमारे पास कौन है? We have Dr. Noman. So Noman, are you with us? जी Noman. All right. Chale, we'll go back to the top then. Asfiya, would you like to do another case? Yes. अच्छा, चलें. इस केस को describe कर लें, please. This is PA mandible. This is PA view of the mandible. All right. Both the condyles look normal. Okay. There is radiolucency on the right side angle region. Okay. What else? The fragments are displaced. Very good. So इसमें फिर question फिर ये आएगा ना कि ये किस direction, is it a favorable fracture, is it an unfavorable fracture? अच्छा, उसको आंसर करने से पहले एक क्वेश्चन आया है which is a very good question, is that this appears to be an open mouth X-ray. तो फिर इसको डॉक्टर आसफिया ने PA क्यों कहा है? तो आसफिया आप बताना पसंद करेंगी आपने इसको PA क्यों कहा है? So this would be a reverse Townes view then? नहीं, आपने ठीक कहा है. This is probably a PA mandible. What Dr. Sakba is asking कि आपने इसको PA कहाँ क्यों है? Why not a reverse Townes? चलिए, फैसल ने आंसर भी बता दिए. आप अगर मैक्सिला पे गौर करके देख लें तो मैक्सिला में आपको टीथ नजर आ रहे हैं? No, it's an edentulous patient. ठीक है ना? The maxilla is
Yes. एग्जैक्टली तो इसलिए आपको फॉल्स अपीयरेंस लग रही है कि प्रॉब्ली दिस पेशेंट इज इन ओपन माउथ, लेकिन एक्चुअली वो इसके मैक्सिला में कोई डेंटेशन है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई आपको फॉल्स अपीयरेंस ऑफ एन ओपन माउथ लग रही है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट एन ओपन माउथ एक्सरे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, सो Alright. एनीहाउ चलें, वो क्वेश्चन तो आंसर हो गया। एंड इसमें जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि इस पे आप कमेंट क्या करोगे कि ये फेवरेबल एक्सरे है, अनफेवरेबल एक्सरे है? I think it's unfavorable because the segments are displaced. ठीक, तो ये क्या हॉरिजॉन्टली फेवरेबल है या क्या वर्टिकली अनफेवरेबल है, कौन सा है ये? I guess vertically unfavorable. वर्टिकली अनफेवरेबल है, ठीक है। आप ऊपर से देख रहे हो एंड इफ इट वाज पॉसिबल, अगर आप इस एरिया में ऊपर से इसको देख रहे होते तो आपको सेगमेंट्स जो हैं आपस में डिस्प्लेस्ड नजर आएंगे, एज इफ जैसे आप ऑक्लूजल व्यू के थ्रू देख रहे हो ना। तो ऑक्लूजल व्यू के थ्रू अगर आप देख रहे होगे, बल्कि इनफैक्ट इसमें अगर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है, व्हाट आई विल डू इज, मैंने इसी टॉपिक के ऊपर इनके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर की थी, वो मैं अभी ग्रुप में दोबारा से शेयर कर लेता हूँ, जस्ट इन केस पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली अनफेवरेबल एक्सरेज। तो ये है, एंड दूसरा भी मैं आपको भेज देता हूँ। I'll just share these in both the groups. So एक मिनट, इसमें भी मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो उसमें ऐसा होता है कि एक मिनट, इसमें शेयर करना थोड़ा इशू दे रहा है। Then I'll share that in this business group later. हॉरिजॉन्टली फेवरेबल में इस तरह होता है कि जब आप इसको ऊपर से जब आप इसको इन अ वे साइड से देख रहे होते हो एंड साइड से आपको लग रहा है जैसे एक फ्रैक्चर सेगमेंट ऊपर की तरफ जो है वो टर्न हो गया है, दूसरा नीचे जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप साइड से देख रहे होते हो, लेकिन रेमस हैज सॉर्ट ऑफ रोटेटेड अपवर्ड्स, तो सिंस यू आर लुकिंग at it from the side, horizontally आप साइड से देख रहे हो ना, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल फ्रैक्चर, ठीक है। एंड जब आप इसको ऊपर से वो कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, और इसमें आपको बकोलिंगुअल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नजर आती है, या मीजर डिस्टल डायरेक्शन में वो नजर आती है, तो क्योंकि आप सॉर्ट ऑफ मैंडिबल को ऊपर से देख रहे हो लाइक एन ऑक्लूसिव व्यू, तो उसको हम वर्टिकली अनफेवरेबल फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये जो पिक्चर मैंने अभी ग्रुप में शेयर की है, अगर आप इसको गौर से देख लो, इनफैक्ट लेट मी सी इसको यहाँ, अच्छा हाँ अभी ऑप्शन आ गया, हैंग ऑन, लेट मी जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। इस पिक्चर को देख लें जो अभी मैंने ग्रुप में शेयर की है, ठीक है। तो इसमें देखें, यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अबव, सॉर्ट ऑफ लाइक एक्सियल व्यू ऑफ द मैंडिबल में जब आप इसको देख रहे होते हो ना, और आप फ्रैक्चर की डायरेक्शन देख रहे हैं, तो इसमें आप देखें ये सेगमेंट जो है वो रिडक्शन की तरफ नहीं जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है। तो दिस इज अ वर्टिकली अनफेवरेबल फ्रैक्चर। और ये दूसरी पिक्चर भी अभी मैं शेयर कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल की, बिकॉज इस पे अक्सर हमारे उसमें भी कंफ्यूजन होती थी। तो लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट ताकि लोगों को वो ना हो। अच्छा, ये भी मैंने उसकी भी शेयर कर दी है हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल की। तो देखें आप, ऐसा है जैसे आप लैटरल व्यू ऑफ द मैंडिबल्स में या लैटरल व्यू ऑफ स्कल में फ्रैक्चर को देख रहे हो, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपको फिर भी समवट ओपीजी पे नजर आ जाएगी। तो अगर आप इस पेशेंट को ओपीजी ऑर्डर करोगे तो उसमें यू कैन डिसाइड फुली कि ये फ्रैक्चर जो है ये हॉरिजॉन्टली फेवरेबल है या ये अनफेवरेबल फ्रैक्चर है, ठीक है। सो आपकी बात ठीक है, और इट इज अ वर्टिकली अनफेवरेबल फ्रैक्चर एंड हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट में अगर आप फेवरेबल अनफेवरेबल पे बात करोगे तो फॉर दैट इफ यू कैन ऑर्डर एन ओपीजी, तो उसमें प्रॉब्ली आपको कंफर्म पता लग जाएगा।
वैसे रफली अगर आप फ्रैक्चर की डायरेक्शन देख लें तो इफ यू कैन सी तो नीचे इंफीरियर बॉर्डर पे ये जरा पीछे पड़ा हुआ है और एंटीरियरली जो है फ्रैक्चर लाइन आगे की तरफ आई हुई है, ठीक है। तो इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद द पिक्चर आई हैव जस्ट रिसेंटली शेयर्ड इन द ग्रुप, तो ये हॉरिजॉन्टली भी अनफेवरेबल फ्रैक्चर लग रहा है, ठीक है। इट इज सीमिंगली गोइंग अपवर्ड्स without any resistance from this segment over here, ठीक है। So in both directions this is a unfavorable reaction, unfavorable fracture. अच्छा, I'm sorry, यहाँ तो questions आए हैं. Is it possible to tell about vertical? No, not in a single film. सिंगल फिल्म में तो प्रॉब्ली पॉसिबल नहीं होगा। इसमें भी हम बेस्ट गेस के तौर पे लगा रहे हैं कि कैसा हुआ ये, इसलिए आपको 2 डिफरेंट व्यूज कराने पड़ेंगे। And you're right, you should take another view at right angle, which would be the OPG in this case, or you can order a true lateral of the mandible. तो उस पे आप फिर जज करोगे कि ये horizontally favorable है या नहीं, ठीक है। ओके, चलें। तो आई होप इस पे जो अनफेवरेबल और फेवरेबल फ्रैक्चर्स वाली बात है वो क्लियर हो गई होगी। चलें, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन अहेड। अच्छा, चलें, डॉक्टर अली, आर यू विद अस? एक और एक्सरे अटेम्प्ट करेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम हियर। जी, प्लीज इस ओपीजी पे कमेंट करें। Here we appreciate an orthopentagram of patient with no name and age and no date mentioned. From right condyle, there's subcondylar fracture on the right, and coronoid looks fine. Ramal, it's a ramal fracture, horizontally right ramal fracture. सही। It looks there is a step deformity probably. अच्छा, आप हाईलाइट कर सकते हैं तो रेमस में कहाँ फ्रैक्चर नजर आ रहा है? Sir, at the level of the occlusal level, probably above 1 centimeter above the occlusal level, probably over here. Yes, over here. Yes. इस एरिया में? Yes. Yeah. There is a horizontal line. Looks like. अच्छा, चलें, ठीक है। और कुछ? There is a step. As we go toward the right side, left of the patient, there is nothing significant we can appreciate over here, and on the left condyle there's no double shadow. Sure. On the left condyles there is no significant, I think. Might be something, some white and black rectangular things are. I can see the conoid looks fine of the left of the patient, and going to the maxilla, both maxillary sinus looks fine. There's no radiopacity over here. In the infraorbital margins looks fine. In the dentoalveolar area, there is nothing significant. Some crowding is in the anterior part, might be some on the right side of the patient. Okay. अच्छा, तो आप कह रहे थे कि नंबर 1 यहाँ कोई शायद फ्रैक्चर लाइन है, तो दिस इज एक्चुअली ये आप इसकी बात कर रहे हो, ये जो नजर आ रहा है? And then sir, step is coming from behind. ये यहाँ जो आप ये अगर आप इस साइड पे भी कंपेयर कर लो तो वहाँ भी समवट है, तो आई वोंट कॉल दिस एज अ फ्रैक्चर रियली, अनलेस अगर आप एक दूसरा 90 डिग्री व्यू भी पहले ऑर्डर कर जस्ट टू बी ऑन द सेफ। वैसे ये जो आपको यहाँ रेडियोपेक शैडो नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली वो है, ये ओरोफैरिंक्स और उसका की शैडो है, ओरल कैविटी। जी सर, ये आपने बताया था। जी सर। तो बाकी एक्चुअली यहाँ एक फ्रैक्चर है जो आपने करेक्टली डायग्नोज किया, एंड एक्चुअली यहाँ भी है। ये जो रेक्टेंगल्स मैंने डाले हैं एक्चुअली फिगर पे एरोस थे,
So I think they might have obstructed your view somewhat, but basically this is a जी सर। bilateral condylar fracture का case है ये। जी सर, ये डबल शेडो दे रहा था लेफ्ट, जी exactly। इसलिए मुझे लग रहा था। जी सर। तो बाकी यही दो फ्रैक्चर्स थे इसमें। बाकी अगर आप इसमें डेंटेशन पे कमेंट करो तो डेंटेशन में देयर इज वन थिंग यू कैन सी कि ये सेंट्रल इंसाइजर जो है दिस प्रॉब्ली ब्रोकन। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कंपेयर कर लें ना आपस में, तो ये जी लेंथ सर। ये ब्रोकन है प्रॉब्ली। ठीक है, जी तो सर। प्रॉब्ली वही बात कि या तो ये भी ट्रॉमा में टूटा है या शायद इट माइट बी समथिंग क्वाइट ओल्ड। क्राउडेड। दूसरा यहाँ आपने क्राउडिंग भी बताया विच वाज वेरी गुड। यहाँ पता नहीं लग रहा कि कैनाइन लैटरल जो है प्रॉब्ली कैनाइन या तो ये पैलेटली निकला है या लैटरल जो है वो पैलेटली पड़ा है, तो यहाँ थोड़ी बहुत वो है क्राउडिंग है। और बाकी इसमें सच कोई रेस्टोरेशन जो है वो नहीं नजर आ रही। 8 जो है वो प्रॉब्ली इम्पैक्टेड हैं। अगर आप देख लें तो यहाँ आपको वो नजर आ रहा है, बोन हाइट जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। प्लस अनदर थिंग विच यू कैन नोट इज दैट 8 जो है अपर ये बकली टिल्टेड हैं क्योंकि इनका जो ऑक्लूजल टेबल है वो आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप 8 के ऊपर आप ये कमेंट कर सकते थे। जहां तक आपने ऑर्बिट्स के ऊपर बात की, आई वुड एडवाइज यू नेवर टू कमेंट ऑन ऑर्बिट्स ऑन एन ओपीजी, क्योंकि ऑर्बिट्स नंबर 1 एक तो सिर्फ बच्चों की ओपीजी में आपको फिर भी समवट नजर आ जाते हैं, बड़ों की ओपीजीज में आपको पूरे नजर भी नहीं आएंगे। तो डोंट कमेंट ऑन एन अडल्ट ओपीजी और उसके ऊपर आप ऑर्बिट्स पे कमेंट मत करो। आई थिंक आप वैसे ही अपने आप को फंसा दोगे, बिकॉज मिड फेज के लिए ओपीजी बेसिकली होता नहीं है। ठीक है ना? जी सर। जी सर। ऑलराइट, चलें, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा चलें, लेट्स मूव अहेड। चलें, आई थिंक दिस इज द लास्ट पीए व्यू, फिर इसके बाद हम ओएम व्यूज पे आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? अच्छा जी, डॉक्टर साहब, वुड यू लाइक टू डू अनदर एक्सरे? जी sure, एक जी। is PF again, PA Right. mandible. वेरी गुड, ठीक। Right side subcondylar fracture I think, ठीक है, और and symphysial fracture, मे बी पॉसिबल। ओके, and और buttress जो है, मगर नहीं I don't, right left infraorbital पे कुछ हो सकता इस पे देखें, पीए मैंडिबल है ना, तो ट्राई टू फोकस ऑन जस्ट द मैंडिबल इन दिस एक्सरे। ओएम व्यू होगा तो उसमें फिर आप ऑर्बिट और बाकी चीजों पे कमेंट कर लिया करें, बट ट्राई टू अवॉइड द मिड फेस इन अ मैंडिबुलर एक्सरे। Positive findings for the PA mandible in this case would be just 2 fractures, one on the right subcondylar region and one on the symphysial fracture. Rest is, I think there's a dentoalveolar fracture of the anterior region of maxilla. वेरी गुड, बिल्कुल ये बेसिकली पिछले पेशेंट का ही पीए व्यू है। And I can also appreciate a root fracture of the lateral incisor, I think, on the right side. ये नहीं, थोड़ा सा राइट पे जाइए। राइट है ये वाला? ये ठीक, C9 है। पॉसिबल है, बट अगेन आई वुड एडवाइज यू नॉट टू कमेंट ऑन डेंटल फ्रैक्चर्स। इसके लिए या तो फिर आप पेरिपेकल एक्सरे ऑर्डर करो या ओपीजी वो करो ना, डेंटेशन के लिए बेसिकली दिस इज नॉट। ठीक है, अच्छा, तो इसमें बेसिकली लेफ्ट साइड, बिकॉज आई टोल्ड यू ये लास्ट पेशेंट का ही पीए व्यू है, तो इसमें इस साइड का भी देख लें। ये कंडाइल आपको नजर आ रहा है जब भी मैं कर्सर के साथ ड्रॉ करूं?
ये condyle है? जी So isn't it? फ्रैक्चर हुआ है ना, मीडियली डिस्प्लेस हो गया। वो पूरा हेड डिस्प्लेस हो गया। जी ओके, जी थैंक पूरा हेड एग्जैक्टली। तो दोनों जो हैं इसमें भी देख लें, जो आपने यहाँ भी फ्रैक्चर डायग्नोज किया था तो ये कंडाइल यहाँ पड़ा हुआ है, देखिए सारा मीडियली पड़ा हुआ है। यू। तो दिस वन इज Right. वेल, ये जो है ये भी यहाँ मीडियली ही पड़ा हुआ है, ठीक है। सो बायलैटरल कंडाइल फ्रैक्चर है। आई थॉट दिस वाज द रीजन यू वेंट फॉर द सिम्फिजियल फ्रैक्चर, कि आप शायद गार्ड्समैन फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे थे ना, तो आई थॉट कि All शायद right. आपने इसको पहले से ही पिक कर लिया था, बट एनी हाउ तो देयर आर टू, वही टिपिकल गार्ड्समैन फ्रैक्चर की वो है, क्लासिकल एक एक्सरे है, ठीक है। तो बाकी यू कैन ऑलवेज say once you've mentioned your findings कि भाई rami on both sides are normal, angle regions appear to be normal, body appears to be normal, and canine areas also appear to be normal, ठीक है। Thank you. चलें, very nice, all right, चलें अब आते हैं towards the OM views। तो OM views में चलें, फैसल। आवाज आ रही जी जी बिल्कुल आ रही है। Kindly comment on this X-ray, please. This is the OM view of a patient. The name and date of exposure in the radiology department is not mentioned. ठीक, I will start with the Campbell lines. very good. Both sides of the FZ region and supraorbital rim seems to be normal. ठीक है And the यार, I front you is- can just say Campbell line 1 पे आपको कुछ नजर आ रहे हैं नहीं, just वो लाइन का नाम ही ले लें बस, that will show कि you know what region you are talking about. Yes, sir. So Campbell line 1 appears to be normal, but the frontal sinus is only present on the left side, and on the right side there is no, probably there is no frontal sinus. ठीक, अच्छा, There seems to be a step in the right side of the infraorbital margin, and also on the right side of the inferior orbital rim. The step is on the inferior orbital rim. अच्छा, लाइन के बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाए ना, लाइन 2 के Yes. स्टार्ट कहाँ से होता है? Right side of the zygomatic arch. ठीक, And- आर्च में कुछ नजर आ रहा है आपको? Yes. After this white square that is placed, there is a line, a fracture line in the, near the temporal process of the zygomatic arch. No, sir, upper. Sir, Arch? inferior part, sir, zygomatic arch. अच्छा, arch ये है. कहाँ ठीक है है। आर्च आपके ख्याल में? ठीक है. दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेना, देखिए आर्च यहाँ है, दिस इज द आर्च ठीक है, ओवर ठीक है, हियर, सो दिस विल बी ठीक द है. आर्च ओवर हियर, ठीक है। Yes, sir. लाइन यहाँ है जो So आपने there is कहा a था, fracture line वहाँ on the arch. Yes, yes. So there is a fracture line on the right side of the zygomatic arch, and on the left side of the zygomatic arch seems to be normal, ठीक, and the right side of the maxillary sinus seems to be radio opaque as compared to the left side. अच्छा, लाइन वाइज मैं फैसल तो आपसे चीजें मिस नहीं होंगी, ठीक है सर. चले जाएं। If we move on the coming to the Campbell line 2, the right side of the zygomatic arch is fractured with the inferior. The right side of the zygomatic arch, there is a radiolucent line, ठीक, and the right side inferior orbital rim, there also seems a step. ठीक, And coming to the left side of the inferior orbital rim, it seems fine. And the left side of the zygomatic arch also seems normal. ठीक, And
Coming to the condylar region, Line 3. line 3. G. Orbital line, third is the condylar region. So the line 3 is line 3 starts from the condyle of one side to the opposite side. Am I right? GG. Yeah, there seems no significant. I cannot appreciate any significant find on the line 3 of the Campbell line. ठीक. And the occlusal line and the rami also seems to be normal here. ठीक. And the fifth treponal line at the lower border of the mandible it also seems to be normal. ठीक. And there are some radioopicities. Probably these are restorations or crown on the on both sides of the teeth.